कस्टम्स की फौज फर्ज के साथी, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर कुर्बानी होती है भारी। तस्करों पर नजर और तस्करी पर फुल स्टॉप होगा। अब यहां सब कुछ स्कैन होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। इस टॉप सीक्रेट मिशन में आप सबके कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया। यह तस्करी बहुत बड़े पैमाने की है। हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि गोल्ड का कंसाइनमेंट मुंबई पहुंच चुका है और आप में से 4 लोगों के पास वो क्लू है जो बता सकता है कि वो गोल्ड कहां है। ये वो 4 लोग जिन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेशन में टॉप परफॉर्म किया है। दिव्याकांत सोलंकी, इमरान शेख, विमल मनियाल, विदिशा। आइए प्लीज कम हियर। आपके पास कुछ इंडिविजुअल क्लूज हैं, प्लीज एक एक करके बताइए कि नंबर्स क्या लिखे हैं उस पर। एक स्क्रीन पे आ जाएगा ऊपर। 1 4 0 1। So now let's see, शायद यहां कहीं होगा इन बैग्स में। अब यहां नहीं, वहां देखिए उस तरफ। अब जो कि अर्जुन मीना ने रिपोर्ट सुलझा लिया, मेरी दरख्वास्त है आप सबसे 1401 चारों से कि मेरे साथ यहां पर आ जाइए ताकि अर्जुन मीना ने फिर से एक बार कर दिखाया कि इज द बेस्ट। कंसाइनमेंट ढूंढ निकाला है और मेरी दरख्वास्त है जिन्होंने आपकी मदद की है कंसाइनमेंट ढूंढने में, के साथ एक फोटो तो बनती है। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे सेंटर स्टेज। जंप इन अ मोमेंट, अगर आप इस तरफ आ जाए तो फोटो बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप चारों का। थैंक यू अर्जुन मीना। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टे बैक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर स्माइल सेज इट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अर्जुन मीना आपको सलाम। थैंक यू सो मच। वेल, मिशन के मोड़ पर तो हम आ ही चुके हैं। आपकी मदद से कुछ राज भी अब खुल चुके हैं, पर यह सिर्फ शुरुआत है तस्करी के इस जाल की। तस्करी को सुलझाने के लिए क्या आप हैं तैयार? 14 जनवरी का है इंतजार। तालियां जोरदार। पेश है ट्रेलर दमदार। तस्करी, मेक सम नॉइज। कम ऑन, फॉर यू फाइनली इट्स हियर। तस्करी, a Neeraj Pandey series. What a trailer. Powerful, entertaining and packed with a blockbuster punch. And thank you for joining us today. I'm Tanya Bami and I'm head of series at Netflix. Happy New Year to everybody. And as you know, we celebrated our 10th birthday yesterday. Aapka pyar, aapki wishes, thank you for that. We feel really heartwarmed. There is no better way to celebrate this big milestone for us than to introduce a story that is completely fresh and a subject that's new across the Indian storytelling landscape. Taskari, or smuggling in India, is a long-standing and fairly complex problem. This crime hits the economy, security, public health all at once. Smuggling networks, or the criminals, they're fairly sophisticated in this world of crime. They're well organized, they're high-tech, they really function across borders, and our heroes, our customs officers, are India's first wall against smuggling. Their job isn't just to really check bags. They're quite the magicians. You know, they're law enforcement, intelligence,
and a lot of psychological work at play every time one of us crosses through that green channel, red channel. Our show, Taskari, The Smuggler's Web, will take you straight into the nail-biting rivalry between the customs officers and the smugglers. The cat and mouse chase that is signature of Neeraj's shows, the suspenseful mind games, the creatless experience, and I really hope, and I'm pretty sure, that you will enjoy this a lot. There's also the shiny world of the airports, the world that we all love, the world that transports us, that green channel, red channel, that we've all casually strolled through. All of that just really got real, and all because Arjun, Meena and team hai to sab kuch scan hoga. Imran hashed me as Superintendent Arjun Meena, and his team of officers stand as India's crackling line of defense against international crime in the show. This show is also really special for us at Netflix because it deepens a creative partnership we truly cherish. Our association with Neeraj and Friday Storytellers has been built on trust, ambition, and a shared belief that stories are novel, that we should tell stories of worlds that are fresh and subjects that are extremely immersive. I cannot think of any other creator who can bring a story to life about a topic as unique and understated as airports and custom officers. Thank you, Neeraj, and thank you, Raghav, for bringing Taskari to us at Netflix. Then there's the stellar ensemble cast. Sharad Kelkar, Amrita Khanvelkar, Nandish Sandhu, Zoya Afroz, and Anurag Sinha. They add to the depth of the narrative and carry the audiences along with their characters. After the thrilling journey that this dynamic team puts you through, I promise you कि बैग स्कैन करवाते समय आप सब जरूर तस्करी के बारे में सोचेंगे अगले टाइम एयरपोर्ट पे होंगे. Thank you. As you said, यहाँ सब कुछ scan होगा. First of all, good to see you and a happy New Year. I'm going to request you to please join me on the side of the stage. There's a reason. Kyunki. Stand next to the elevator. Yeah. Oh yeah. Perfect combination. You know, I would say क्योंकि अब मंच पे जो है थोड़ी तस्करी होने वाली है और मंच सज रहा है इंटरोगेशन के लिए because तस्करी की बात चल रही है. But first of all, also let me congratulate you on 10 years of Netflix India. Thank you congratulations, and you know, let's have a huge round of applause because every time वो जो एक आवाज आती है ना तो हम ऐसे खुश हो जाते हैं. कौन सी है वो आवाज? Tudum. As soon as Tudum comes on, we are entertained. We know we've got the best content that's going to be lined up. And thank you for giving us 10 years of fantastic content. Thank you for all of you for giving us so much love and really watching show after show and really, you know, gracing our events like this. And 2026 is also starting with more love with Taskari on the 14th of Jan. Absolutely. Let me congratulate you on that because, you know, this is a topic that's not been delved into. Yes. There are different sectors that are touched upon, but Customs Department is something that's not talked so deep into. So thank you for bringing this like I always say, a story is as good as a creator's imagination, and we have the best in that sense. There's Neeraj, Raghav, and the best imagination from Friday Storytellers. So it would be right to say it's gripping customs entertainer? Oh yes, it's a thriller, out-and-out thriller. It's, you know, it's a mad chase, like I was saying. It'll keep you on the edge of your seat, guessing and rooting for our heroes and sometimes even wondering how they're going to actually do the job they're supposed to. We can't wait for that. I'm going to request you now to join us on center stage as the interrogation table is ready. We'll get to that a little later, but if you could join me center stage because मेरा एक सवाल है. मुझे interrogate कर रहे हैं आप? शुरुआत तो आपसे है. आपने हमें पेश किया तस्करी से की इस दुनिया से तो रूबरू करवाया है. तो आजकल जो है और आई एम श्योर ऑडियंस भी ये जरूर रेजोनेट करेंगी कि हम बहुत पिकी हो गए हैं कंटेंट को लेकर, राइट? बिकॉज़ यू नो सो तस्करी जैसा शो में ऐसा क्या लगा आपको? आई मीन ये शो और इसकी जो थीम है ऑडियंस के टेस्ट और आज के टाइम से कैसे रेजोनेट करेगी? See, we all love to travel. अब सब लोग जाते हैं एयरपोर्ट्स पे, अलग-अलग जगहों पे, लेकिन वो एक कोने में ना वाइट वर्दी में जो ऑफिसर्स खड़े होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं. We may not pay a second look to them because, you know, we may not have much to declare.
but it's a whole exciting world. तो जब नीरज ने हमें बताया था ये idea, it was so exciting and so fresh because almost everyone's been to an airport, everyone's walked through the green channel, everyone's ticked nothing to declare. लेकिन imagine if that flipped. What's the intrigue? Where is the gold coming from? Where is all the contraband sort of hiding? It's not just a thriller. It's actually like when we showed it to our colleagues at work, etc. Everyone's so intrigued to know, saying, "ये करते कैसे हैं यार smuggling? वो भी देखना है, and इनको पकड़ेंगे कैसे? वो भी देखना है." So it's a intrigue which is applicable from both ends of the crime funnel. So ये definitely एक eye opener भी होगा सभी के लिए कि watch out क्योंकि यहाँ पे सब कुछ scan होता है. हाँ, मतलब eye open होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. Yeah, true. In an optimistic manner that you can't get away with anything. Yeah, No, true. they've got their eyes on you. Yeah. सब scan होगा. Yeah, sub scanner, as you rightly said. Then I'm going to request you please stay back because now I would like to welcome a man who's been part of the directorial teams of films like Baby, Rustam and MS Dhoni, The Untold Story, जिन्होंने नीरज पांडे सर के साथ तस्करी को co-direct किया है. Let's welcome on stage Raghav M. Jayarath. Raghav, welcome and congratulations. The trailer is out. Looks very, very impactful. अब तस्करी में मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम सब जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मोमेंट था शूटिंग के दौरान as a director आपके दिल के करीब है, और rather I'd say which is like the most, what makes you feel proud as a director of Taskari? I think the entire project, you can't बोल नहीं सकते कि ये कोई moment है या कोई एक scene है which is very, very important for us. I think first day of shoot becomes very, very important. The last day of shoot, of course, becomes very, very personal and emotional. But every scene that has been crafted with the research that we put into the show, with Neeraj's guidance and how we pull on everything. So, plus I think the most challenging thing I would say is the airports. You shooting at live airports with the amount of time that we get at shooting at airports. And putting all of it together, I think that was one of the biggest challenge, and of course, I think one of the most memorable moments also. Yeah, so that's about it. Yeah, and as you rightly said, the effort that goes in, we only get to see the series and the output that you show to us, but there's so much that goes in, and it takes a village to create what you guys create. So kudos to you, and wishing you the best. And इसी के साथ I'm going to request both of you to please join me on the interrogation table. Interrogation. Yeah. इतना सन्नाटा क्यों है? Yeah, this sannata is something that gets you, and definitely why not? Because this is the table जहाँ पे कई सारे सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं. पर उससे पहले, please विराजमान होइए. Thank you. Please be seated. Now, ladies and gentlemen, the ensemble cast of Taskari, customs operations पर बनी इस सीरीज के कास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. Shall we? Fans in the house. Yep. Let's welcome the cast on stage. Films, web series या television हर बार screen पर आकर अपनी performance से एक छाप छोड़ जाती है. Ladies and gentlemen, please welcome Amruta Khanvilkar. सवालों के बाण इसी टेबल पे आने वाले हैं. टीवी से लेकर फिल्म्स और ओटीटी तक हर नए किरदार में नया कमाल. Always controlled, always very, very confident. Let's welcome Nandish Sandhu. Welcome. कॉम्प्लेक्स और पेचीदा किरदारों में खुद को एफर्टलेसली ढालने वाले अपनी इंटेंस परफॉर्मेंस से तस्करी में दिल जीतने आ रहे हैं अनुराग सिन्हा. And now
time for Arjun Meena, an actor who's consistently showcased his versatility on screen, romance thrillers, even grey characters, all with absolute finesse. थोड़ी देर पहले ये अपने screen avatar में हमने देखा था इन्हें Arjun Meena, and now fan club make some noise and everybody in the house, please welcome the ever charming Imran Hashmi. You know, you seem to be the front runner of that fan club. I love you for that. Thank you. Yeah, you can blow a kiss. You definitely, yeah. The guy in black shirt, he's been like the ardent, Imran sir, the guy in the black shirt right there, he's been only rooting the whole. If the mic could be on, please, thank you. But we'll definitely, he'll get a. अपने हर परफॉर्मेंस के साथ हमारे अगले जो किरदार हैं अपने हर परफॉर्मेंस के साथ फैंस को और करीब आते हैं तस्करी की कहानी का बहुत ही अहम हिस्सा द वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल प्लीज वेलकम ज़ोया अफरोज And now, that deep voice, impressive screen presence, सालों का experience, loved by fans and admired by colleagues. Please welcome Sharad Kelkar. Namaskar and Swagat. And now, ladies and gentlemen, the man himself. Feature films ho ya long format web series. He's the master storyteller, a writer-director who stamped his signature on films like A Wednesday and Sikandar Ka Muqaddar and super hit series like Khaki that have left audiences, all of us, and we've applauded it out and out. Please put your hands together for creator of Taskari, writer-director Neeraj Pandey. नीरज सर तस्करी के इस इंटरोगेशन टेबल पर आपका स्वागत है थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन द लॉन्च ऑफ द ट्रेलर थैंक यू सो मच एंड वेल ये है अमेजिंग कास्ट द मेकर्स क्रिएटर्स ऑल ऑन द इंटरोगेशन टेबल तो तस्करी की टीम तो तैयार है आपके इंटरोगेशन के लिए भी रेडी है आपके भी सवाल आएंगे पहले मैं इंट्रोगेट करूंगा उसके बाद आप सभी इन्हें इंट्रोगेट कर सकते हैं यू नो कस्टम ऑफिसर्स की नजर तेज होती है उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है जरा यू नो बॉडी लैंग्वेज है नर्वसनेस है नजरें चुराना सब कुछ उन्हें पता चल जाता है पर ये सब यहाँ पर स्कैन होता है और एक बार किसी पे शक हुआ तो उसकी थोड़ी खातिरदारी एयरपोर्ट पे हो ही जाती है इंटरोगेशन रूम में हो ही जाती है तो ये सारे तैयार हैं इंटरोगेशन के लिए तो मैं कहूंगा मेरे कागजात पेश किए जाए कैन आई हैव माय पेपर्स प्लीज हाँ जी I'll get out of character and tone down myself because I've been a fan of his work. And you know, एक चीज हमने नोटिस की है कि चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज, आपके काम में प्लानिंग, पेशेंस और प्रोसेस का सक्सेसफुल फॉर्मूला होता है. So तस्करी के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था? And you know कि कस्टम ऑफिसर्स की दुनिया और सिस्टम की ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखना या फिर सीरीज के एंटरटेनिंग फैक्टर को मेंटेन करना. First of all, thank you for coming by, and it's a very proud moment for us to showcase this trailer to you guys. So thank you so much. सबसे challenging moment था this thing, this other side of the table, the cast that you see, to bring them all together and to tell this story in the most entertaining manner. Yeah, that I believe was the biggest challenge. Thank you, and we wish you all the best to all the cast but you guys have done a phenomenal job to the trailer. The glimpse that we've got, you know, leaving us wanting for more and more. So, which is the 14th of Jan. We got to wait and watch. But I'm going to try and get some Tanya to spill some beans on that. Tanya,
नेटफ्लिक्स के लिए थ्रिलर्स सिर्फ एक जॉनरा नहीं, आई फील एक सिग्नेचर बन चुका है. एंड व्हेन तस्करी एज अ प्लेटफॉर्म आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्साइटिंग थी, स्केल, रियलिज्म या फिर नीरज पांडे सर के स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग? I don't know how to choose, so I'll say all of the above. But I think most importantly, we're big fans of Neeraj's work. We love the way he tells his stories. कितने audiences से वो एक साथ बहुत simply बहुत कुछ कह सकते हैं. और सबसे एक्साइटिंग एक्चुअली मेरे लिए पर्सनली जो लगता है कि वो हमेशा एक नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं. देयर इज़ ऑलवेज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू एंड टू पील ऑफ लेयर बाय लेयर. एंड he starts off like with the tip of the iceberg, and literally by the end you're deep into the world, you understand all the characters, you understand the rules, and you're really immersed into it, which I think is, all credit to his storytelling and his direction in the way he sort of brings the experience to life. We've also taken the dive. We're waiting to, get into the ocean It's just deep a down few and days, understand. few days अभी more. तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है पूरी की पूरी सीरीज. Raghav, my next question is for you, and Yes, please. लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग में सबसे जरूरी होता है ऑडियंस की दिलचस्पी और क्यूरियोसिटी मेंटेन रखना. समटाइम्स दिस कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क. जो एपिसोड्स आपने डायरेक्ट किए उनमें व्हाट वाज मोर टफ, स्टोरी की पेस या कैरेक्टर डिटेलिंग? First of all, thank you for the question, and thank you everyone for coming. I think it's a combination of both. You just can't keep it एक चीज पे कि pace important है. I think अगर सही performance होगी, then you'll be immersed in the scene, and if you keep the pace right, so it's a combination of both these things together. And of course, we've had multiple things on set while this was happening. So I would just say it's a combination of both the things. Yeah. So you've got the perfect concoction that you wanted. Let's see. We've done our best. We Let's see already what loved happens. it. We already loved the trailer. झलक ही हमें पसंद आ गई है. इमरान सर, आपसे है अगला सवाल. And first of all, I did mention that I'm going to repeat that and say that not just a fan of his acting skills, but also his oratory skills. One of the finest speakers that we've got. And thank you for being you. My question is, across the years, हमने आपको इतने अलग-अलग roles में देखा है. With that every new venture, we are excited कि what's next. Now, Taskari के Superintendent Arjun Meena, what is he all about? Actually, I don't want to give too much away right now character के बारे में. I think मैं चाहूँगा कि audience ही इस चीज़ को experience करे show के ज़रिए. I think what's interesting is जिस तरह show लिखा गया है, there are a lot of surprises, and that's inherently there in the DNA of the show क्योंकि एक thriller show है, and Neeraj ji is known to kind of master of thrillers. When you think of thrillers, I think that his name is like there at the pinnacle. And the reason for that is that it's very, for thriller audiences, उनको surprise करना बहुत मुश्किल हो गया है because they are always ahead of the curve. They know exactly, okay, अच्छा इस पे एक cliffhanger moment आने वाला है या अगला twist ये आएगा. And I'm a thriller fan also. मुझे जब episodes दिए गए थे पढ़ने के लिए, I was completely like, a lot of things in the show will take you by surprise, and wonderful cliffhanger moments throughout the show. So yeah, I can't talk much about Arjun Meena. I think we'll let him be a mystery and let people experience it in the show. Even if you don't spill the beans, the fact that you are leading, you're heading it, we love it already. So Thank you. And Thank we you. can't wait for the surprises. Thank you so much. Thank you. And wish you the best. Thank you. अगला सवाल आपसे है. The association with Netflix India, Tanya and the team, has been long. There are several projects that you worked on. How has it been working with Netflix India? Fab. It's been a journey that we are extremely proud of. I mean, we managed to bring some interesting stories to our audiences, and there's a certain bit of faith going over there, and that's what keeps us going. And it's been an incredible journey, and yeah, I mean it's fun. It's extremely interesting as we go along. Yes, we are ready, and thank you for, and we hope 2026 gives us more and more content to be entertained. Thank you. Amruta, कशी आहेस? मस्त. आणि तुझ्यासाठी एक ती लाईन, बाण नजरेतला घेऊन अवतरली सुंदरा. अत्यंत सुंदर दिसतेस थँक यू, धन्यवाद. आणि तुला पुन्हा एकदा भेटून आनंद झाला.
Thank you. अमृता, तस्करी में आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? Firstly, it's a given truth and it's a universal truth actually कि हम सब जो है वो नीरज सर के बहुत बड़े फैन हैं. And when I was casted for this role, वो एक मुंबई की लड़की है, badass है और अपने हाथों से बहुत कुछ कमाल करती है. I mean, she is somebody who knows a lot of things in customs and you know, वो कहता है ना कि आदमी देख के पता लग जाता है इस बंदी को कि ये क्या है, कितने वेट का है, you know. तो जैसे इमरान सर ने कहा कि of course we don't want to reveal a lot of things, but I just want to say this that मिताली is every Mumbai girl, she's a badass और मतलब उससे नड़िए मत, बस that's about it. तो ये जो मिताली है, बैड मिताली, इमोशनल तैयारी ज्यादा करनी पड़ी या प्रोसीजरल? मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्शन किया है, जैसा आपने देखा होगा, एंड फिजिकल तैयारी बहुत थी, इमोशनल तो यार हम लड़कियां होती ही है. So yeah, and we saw it, and you've done मुझे तू justice के लिए सलाह. Thank you. And next question is शरद केकर, years of experience, fans के expectations और भी बहुत कुछ होता है at stake for any new outing on screen. What is that one factor जिसने आपको convince किया कि ये role तो मुझे करना ही है? Hi, good evening. दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं इसके. सबसे पहला नीरज पांडे सर और दूसरा कहानी. मैं उसके अलावा किसी फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ. वो कहानी कितनी अच्छी है और कौन बना रहा है, ये बहुत ज़रूरी है. और दोनों ही चीज़ें आई थिंक दी बेस्ट हैं इस जॉनर में मेरे ख्याल से. सो थैंक्स टू नीरज सर, थैंक्स नेटफ्लिक्स फॉर दिस. And you are the best. मुझे when you listen to this man speak, all you can do is, what a voice, what a voice. Zoya, my next question is for you. And नीरज सर के साथ तो आप काम कर चुकी है, तो एक comfort level आ ही जाता है. And but तस्करी का ensemble के कास्ट के साथ काम करते हुए सीरीज में, what was your experience like? Wow, सबसे पहले तो I'm extremely honored to be sitting in amongst all these people and their company. I mean, मेरा experience तो बहुत बेहतरीन रहा है. सबसे बड़ी बात I mean मेरे लिए ये रही है कि नीरज सर जो कि एक national award winning director हैं, and he's given us like a Wednesday. He started his career from there, and then Dhoni, and then Special 26, ये सारी मेरी favorite films रही हैं. And I have always looked up to him as a director, as a filmmaker, as a storyteller. So, for me to not only be cast is something that I am extremely, extremely honored with. And also, it's 10 years for Netflix, so congratulations on that. And मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास रहा है, बिकॉज जो ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन है ऑफ कोर्स नीरज सर का एंड विद ऑफ कोर्स इमरान हाशमी. With Imran, it's been such a wonderful working experience. I mean, he's made generations of all women go weak in their knees, so you can expect what I felt while working with him, and it was a great experience. But honestly, he's so grounded, everybody in the team. Actually, मैंने नीरज सर से ये भी कहा था, मेरी पहली फिल्म जो है जब मैंने बचपन में की थी, उसके बाद आई थिंक it's one of the best sets to be on, Friday Filmworks, and everybody is so grounded, so they take care of all their actors, they're professional, they're on time, the story is, you know, fabulous, the characters that are written are so layered. मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं इस सेम पैनल में बैठी हूँ उनके साथ और उनके साथ काम करने का मौका मिला है. सो थैंक यू सो मच नीरज सर एंड द एंटायर टीम ऑफ नेटफ्लिक्स फॉर नॉट ओनली हैविंग मी बट रिपीटिंग मी. या
So it'll be apt to say it's a special 26 already for you. In Taskari. As an air hostess, I don't only serve smiles or coffees, I serve surprises. Oh, a lot of surprises in store. Thank you. Thank you, and we're looking forward to that. Thank you. And wish you the best. I'm lucky and fortunate enough to be at every special mode of your life. So thank you. It's indeed an honor. Nandish, मेरा सवाल आपसे है. जी. यहाँ पर ग्रीन चैनल है, रेड चैनल है स्टेज पर. दोनों तरफ से एंट्री है. आप ग्रीन चैनल से स्टेज पर एंटर हुए. So obviously you are on the good side. तो तस्करी में आपका कैरेक्टर कितना सीधा या कितना उलझा हुआ है? मुझे लगता है कि उलझा हुआ हर इंसान थोड़ा सा उलझा हुआ होता है अपने आप में. बट आई फील गुज्जर द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, ही समबडी जो काम तो ऐसी जगह करता है जहाँ पे दिमाग की और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, लेकिन वो बंदा दिल वाला है. तो when you watch him you would see how Gujjar operates, and also in this show I feel it's very nicely put, the character, and how जैसे हम सबको इतने प्यार से प्रेजेंट किया है हर कैरेक्टर को नीरज सर ने. I think it's going to be a pleasure watching this series. Also I would want to congratulate Netflix. 10 साल हो गए Netflix को. तस्करी पहली सीरीज है जो Netflix पे आ रही है इस साल. So a huge congratulations, and we're just waiting कि क्या feedback मिलता है सबका. Wishing you the best. You guys are the stars of the front runners of the next decade for Netflix. So wish you the best. And now my question is for Anurag. Anurag, जब आपको तस्करी के लिए अप्रोच किया गया तो किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया? Was it the script or the character? The first thing that attracted me was Neeraj Pandey sir and Friday Filmworks, because I had been trying to get in touch with them and work with sir for a very long time. And after that, my next lookout was the story and the role that I'm playing. And whenever I'm choosing a role, I want to see that that particular role is holding value to creative honesty, and I could find that. And I'm very thankful to Raghav sir. He's my debut director here, and Neeraj sir. And that's what attracted me. And I could see that there are possibilities that I can explore, and I enjoyed doing it, and that's how I got it. इसीलिए the third option I did not keep Neeraj Pandey in the script here, because the script या character या Neeraj Pandey sir, it definitely, because अगर Neeraj Pandey की team से call भी आया तो it's like the first go. In script, character, as you rightly said, so but wish you the best, man. Thank you so much. Wish you the best for Taskari. And now the interrogation room is open for our friends from the media. You go ahead, interrogate our cast and the makers, but जब सवाल पूछेंगे सबसे पहले आपका नाम, the publication that you belong to, and सबसे अहम आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं. That ways we can address that respective individual. Our team will help you with the mic. If you get the mic, please go ahead with the question. Hi, Nash from Galata, India. First of all, congratulations. Trailer बहुत ही gripping है. And my question is for Neeraj. ये जो customs की दुनिया हम देख रहे हैं, ये जो तस्करी आप on screen लाए हैं, इसके पीछे क्या कुछ रहा है? कितना challenging रहा है, कितना fun रहा है? What was that all like? नहीं, challenge is always welcome in our line of work, number one. क्योंकि अगर challenge नहीं है, then things will get boring right from the beginning. तो हम आपके सामने क्या रोमांचक कुछ ला पाएंगे? तो सबसे पहली बात तो ये थी कि the world was very interesting, the world was very exciting. It was an unseen world. And that was a huge magnet for us as storytellers to bring it to the audiences. आमतौर पे जो challenges आते हैं, that was what was coming during production and all that, but nothing that we didn't enjoy negotiating, because it was a tight team, all focused on delivering the best story that could be told. And yeah, it was a fun ride for all of us at the end of the day, and I think I can speak for all of them. Thank you for your question. Sorry? जी एक सेकंड मैम, माइक आ रहा है आपके. मैं भावना शर्मा, नव भारत. आप ये जो आपने कहा कि चैलेंजिंग था, लेकिन अगर हम आपकी अवेयरनेस डे से अब तक की आपकी जर्नी देखें तो आपने रियल इंसिडेंट्स
पर जो बेस्ड स्टोरीज हैं उनको हमारे सामने आप लेकर आए हैं। तो उस लेवल पर कितना डिफिकल्ट था रियल और रील को मर्ज करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं और जो बहुत बड़े बड़े केस सामने आए हैं उन सबको इसमें इंडक्ट करना, स्टोरी के लेवल पे और डायरेक्शन के लेवल पे। आपने वेडनेसडे की बात की तो वो 100 मिनट की फिल्म थी, ये 7 एपिसोड और तकरीबन मेरे ख्याल से या तानिया नोज इट, हाँ 4 घंटे 4 घंटे की कहानी है। तो जाहिर सी बात है सब कुछ जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है। आपको एक नॉवेल की तरह जो है वो पूरी की पूरी कहानी कहनी पड़ती है। तो टू कीप इट एंगेजिंग फॉर ऑल द 4 hours ऑफ कंटेंट मेकिंग, दैट वाज द चैलेंज। बट आई थिंक दैट more than that, it's a very very interesting format of storytelling and a very different format from films. तो इसका जो to meet its demand, to meet its requirements, that's something that you enjoy and you relish as a storyteller. It's very different from films and उसका मजा उसमें। Thank you. Imran, on your left, on a lighter note, if you were allowed to smuggle something, what is that one thing you'd smuggle? You're getting me into trouble now, huh? It's okay. I have It's smuggled a allowed. lot of things. Like what? Give one, na? I think Neeraj knows the answer to that. No, so even we want to know now. He knows the answer. It's between both of us. I think he would have smuggled the same thing. Okay. I will never let you know what that is. Because I'm actually traveling now. Oh, that's हाँ, why. अगर किसी ने देख लिया ना सीधा रोक देंगे Have एयरपोर्ट you been stopped at the Green इंटरनेशनल Channel? फ्लाइट ले रहा हूँ मैं भी। हाँ Have you been stopped at the Green Channel? Not for a picture, but. I think they've been very sweet with me. Whenever I've traveled back, custom officers have been very sweet. लेकिन वो एक होता है जब आप you know, is that typical thing? There's no logic to it. जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, आप शायद गाड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं लेकिन RTO ऑफिसर जब दिख जाता है तो पता नहीं वो खौफ कभी जाता नहीं है। वो शुरुआत में वैसी चीज होती है। And when I started traveling alone, I might have packed only clothes in my bag. लेकिन आपको हमेशा लगता है कि I'm carrying 100 kilos of contraband in my bag जब आप immigration से जा रहे हैं या आप कस्टम से ग्रीन चैनल से निकल रहे हैं। तो वो खौफ कुछ सालों तक था, which is dumbfounded. It's not really anything logical. I have got called out at immigration checks very early on. Maybe something about the earrings when I used to travel alone. Abhi they see me with my sweet family, so they kind of don't suspect me. Again, early on in early 2000s, I used to get whisked away on the side quite a bit. Profiling कहते हैं उसे. I fit the bill of something or someone. I don't know who that is. I don't know who that person is, but yeah, I didn't find out. No. When Shravan was asking the question, when he said on a lighter note, did he mean on a lighter note? Quite a fiery question. Next up, if anybody please raise your hand if you have the mic. Hi Tanya, congratulations on 10 years. So my question is for Sharad. Action scenes ke time, did you discover something unusual happened to you while during the action scenes that you shot? I hardly have action scenes here, first of all. And though I'm not trained in action scenes, but मुझे लगती नहीं है, किसी और को लगती हो तो पता नहीं. But nothing happened. There's no action sequence as such for me. What was the most unexpected thing in this show for you? There was a scene, I think, there was a very interesting scene. The light was going and then the angry young man, wakes up in the sir, jaldi karo, light ja raha hai, mujhe cover karna hai scene. So that particular scene was very, very difficult between me and Anurag. And हम दोनों की हालत खराब थी कि लाइट ना चली जाए कहीं, अंधेरा ना हो जाए, बहुत मार पड़ने वाली है उसके बाद. So I think that was a scary scene for us, I think, apart from anything else. लाइट नहीं जानी चाहिए, सीन खत्म करो दो उससे पहले. Thank you. Should I ask? Hello sir, good evening. My name is Vipul Mishra from Uttar Pradesh. I'm a content creator. Nice to meet you. जैसा कि ट्रेलर था हम लोगों को बहुत मजा आया, लेकिन अब जैसे 4 घंटे हम लोग देखेंगे तो क्या इसमें कुछ मतलब बेहतरीन गाने भी हैं जैसा कि हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Did I hear that right? गाने.
सर एक्चुअली वो हाँ हंसी बन गए वो जाता नहीं है सर दिमाग में से। एक्चुअली जब पहली बार जब मैं नरेशन जब सुना था तो मैंने नीरज जी से कहा भी था कि इसमें प्लीज हर एपिसोड में एक गाना डाल दीजिए। सर ट्यून डाल दोगे तो भी चलेगा सर, डाल उन्होंने ऑलमोस्ट भी गेट आउट बोल दिया ऑफिस से। एंड आई थॉट आई वुड लूज द शो। तो मैंने बोला ठीक है, गानों के बिना काम चला लेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अच्छा है इसमें, उससे काम चल जाएगा। 100% सर आप हैं इसका मतलब सुपर तो फिर आप बहुत खुश रहेंगे शो में। बहुत ही बढ़िया सर बैकग्राउंड स्कोर है। एक सर छोटा सा और सवाल है, क्या इसमें मतलब जैसे थ्रिलर तो है ये, हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा एक्साइटिंग लग रहा है सब कुछ, क्या थोड़ा बहुत मतलब लव स्टोरी देखने को मिलेगी? क्योंकि कास्ट इतनी खूबसूरत, जैसे मतलब कास्ट के साथ जस्टिस में बस दो खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा सवाल पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स लव स्टोरी होगी। क्या बात है, क्या बात है सर, ह्यूज अप्लॉज। मैं वो लव स्टोरी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई साहब अच्छा हुआ आपने हाँ हंसी बन गए बोला, भीगे होठ तेरे नहीं बुलाया सीधे। Hi, right here. This is Kunal here from India Forums. I'll start with Raghav. Firstly, I think Raghav, your working marriage with Neeraj is probably one of the most lasting ones. You've obviously been on as an associate director with him on multiple films. Now you take over or being a director yourself, and of course Neeraj is there to guide you and do everything. How does this relationship evolve from you being there with him and knowing him and learning from him, and now taking onus on yourself as well? I think it's been to look back, it's been one of the most beautiful relations that has evolved. And so when I came to Mumbai, I've only worked with Neeraj sir, and I've been with Neeraj sir and Sheetal sir, my producer. So I've just been guided by them throughout. And पिटाई भी बहुत होती है, डांट भी बहुत पड़ती है, सिखाया भी बहुत जाता है, but the best part was that a lot of creative freedom was given. Of course, discipline becomes very, very important, which allows us to, handle challenging situations and get everything done. But creative freedom was something that he allowed the most for me also and for the team also. And that is the reason I think Taskari, when you see the show, so there's a lot of places, we just go all out. And the creative freedom is what I would say that's been one of the most beautiful relations with Neeraj sir at all times. Yeah. Fantastic. And just you continuing, I'll ask you something, Tanya. Firstly, everybody's congratulated you enough, but I'll be the latest one. Congratulations on 10 years. Thank you. Fantastic, continued great stories. We keep talking about rooted storytelling, being global in itself. You don't really need to have that conventional global appeal as people usually talk about. This is still, more into the conventional global appeal because everybody knows customs, everybody knows airports, so to speak, per se, right? What is it about a thriller that goes beyond these knowings? And of course, Neeraj Pandey has a signature flavor coming, and then that itself having that appeal to global audiences as well, while still being very Indianized, so to speak. It's a very intense and a very long question. We should schedule a meeting, but I'll hazard an answer. Great markers that you suggested, but at the heart of everything is really what the story is. I think it is really the resonance of the story and what you really buy into in the first few minutes that really hook you and keep you going through the episode until the cliffhanger, which leaves you breathless, and then you have to roll over and watch the next episode. But of course, I think fandoms of great creators like Neeraj goes a long way. The cast, Imran, Sharad, the whole cast, I think their respective fandoms are also things, you can see the energy in the room. They also appeal to, I would say, cross borders, to diaspora perhaps. And the minute enough people in a certain territory are watching a title, it starts, the famed Netflix algorithm starts sort of really spreading the cheers, as I may, in this festive season. And hopefully, it just grows and grows. And we've seen that love pretty much with every single title that we've launched. Every single title of ours is, more or less appearing in the global list. So yes, the airports, this genre, there are these markers, but I think at the heart of it is a story well told. Nothing can compete with that. Zoya, hi. Seema from AFP. Zoya, did you think? Hold on. Yes. जोया, डिड यू थिंक कि इमरान हाशमी जैसे कस्टम ऑफिसर को एक किस से कंट्रोल किया जा सकता है?
What? अनबिलीवेबल. ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग तो मैं सोच भी नहीं सकती थी एक्चुअली. ये होगी. हाँ. I don't know what to answer to that. When I'm sitting over here on the dais, should be prepared for the worst. मैंने सोचा था ऐसा, पर मौका नहीं मिला मुझे. I think just being in the same frame with Imran he has enough charm. वैसे एक चीज़ है I would like to say, every time जब भी मैंने किसी को कहा कि मैं ये शो करने जा रही हूँ, तस्करी शो है and I'm with Imran Hashmi in the show, so सबने मुझे एक ऐसा एक लुक दिया है. So तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ. ये एक नीरज पांडे शो है and there will be a lot of surprises for you, but ये सरप्राइज शायद आप मिस करेंगे. Family friendly show है. Hi, this is Seema from AFP. I would like to ask Neeraj and Imran. Imran, what kind of prep went into it? Because custom officers are supposed to be very, very alert, analytical thinking, and all like on the move. And also for Neeraj is like you have worked with many different actors. So was Imran the first choice for you? You want to take this first? No. I think generally I've traveled a lot. Even before this, whenever I have कोई वो आपके subconscious में बात रह जाती है. You have seen custom officers at the airport. वो चीज़ होती है. लेकिन consciously show sign करने के बाद I spoke to a lot of people. और सबसे जो बेहतरीन चीज़ इनके स्क्रिप्ट के बारे में, everything is there. It's very well researched. तो एक अच्छी टीम थी, नीरज जी, राघव, the entire team, support system. कोई भी जो सवाल था मेरा उसको लेकर, that was thanks to their research, and they've obviously been ideating this for almost 2.5 years. तो वो था, and वही जो एक body language में होता है जब आप airport पे land करते हैं, it's more about reading people. इस प्रोफेशन में. और आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कि आज तक कस्टम ऑफिसर्स पे कभी फिल्म बनी नहीं है. एंड आई डोंट नो व्हाई. दिस इज वन लॉ एनफोर्समेंट बॉडी जिसको लेकर कभी कोई फिल्म, कोई शो नहीं बना है. वी हैव मेड फिल्म्स ऑन पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी, BSF, and I've played pretty much everything, but this was fantastic. And I just felt ये इतनी नई दुनिया है. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी and जब जिस तरह तस्करी होती है, how smugglers get these things in, and also जब एक custom officer किसी को देखता है, it's not just about seeing someone suspicious in the red channel or green channel. इतना उनका ही काम लगता है उसमें. There's so much of research that goes from their team. So it's a well-oiled system, and just knowing the intricacies of that it's fabulous how they've actually coined so many different ways things are brought into cities in our country. हमने देखा है, पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, but nothing like you see in this show. I was in some places, I was like laughing in places like, how are these things coming in? And it's so innovative and creative. Neeraj, would you like to answer? Like you have worked with many different actors, stars, and so Imran was your first choice? Yeah, the only choice for this one. I mean, he was the one and only choice for this, and we would have only thought of looking beyond if there was no interest from his side, which was not the case. I think he was on board inside of 2-3 minutes of our meeting, and it was a fab journey. Yeah. Thank you. If you have a question, please raise your hand. They'll help you with the mic. Yes. Hi, Angelika here from the Trending Times. My question is to Sharad sir. Yes, ma'am. Sir, हीरो की आवाज बनने के बाद अब विलन बनना कैसा लग रहा है? नहीं, फॉर एन एक्टर ना एक बहुत जरूरी होता है कि वो अलग अलग किरदार निभाए. नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे मुझसे. तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स. और for the last 20 years I've been trying that only, and by God's grace थोड़ा लकी हूँ कि मुझे मिलते रहते हैं ऐसे किरदार.
और कोशिश करूंगा ऐसे ही, कभी इधर साइड, कभी उधर साइड, कभी ग्रीन चैनल, कभी रेड चैनल. सो कोशिश यही रहेगी. हाँ, उससे ये होता है कि फॉर एन एक्टर टू ग्रो, उसको अलग अलग किरदार करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो अपनी छवि या मैं ये हूँ और ऐसा ही करूँगा तो एज एन एक्टर ग्रो नहीं करेगा. वो शायद बड़ा स्टार बन जाए, बट वो एज एन एक्टर शायद बड़ा ना बन पाए. तो मैं एक्टर थोड़ा डिसेंट बनना चाहता हूँ. स्टार आप बना दोगे, बाकी बात में. Sir, as an antagonist, what will be the message for the audience? Pardon? As an antagonist of the show, what will be the message for the audience? इट्स एंटरटेनिंग शो. बहुत दिनों से मोनो सारा सोना लेके डॉकयार्ड पे आ जाओ, ये लाइन सुनी नहीं थी किसी ने. तो वैसा ही शो है, एंटरटेनिंग है, कमर्शियल है, बिल्कुल. अब ये ना समझें कि बहुत डार्क है. इट्स एंटरटेनिंग शो, फुल फन है, कमर्शियल है, फैमिली शो है. फैमिली शो है. तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा. शो है, वैसे एंजॉय कीजिए आप शो को. देखिए हमारी लाइफ में ना, बताओ, इतना स्ट्रेस हो, इतना होता है. ऐसे शो बनने चाहिए जहां आप एंजॉय करें. और जैसे इमरान ने कहा कि इस सब्जेक्ट पे कोई फिल्म नहीं बनी है, और शोज में भी एक या किसी फिल्म में छोटा पार्ट होता है, वो एक ये पूरा शो उसके ऊपर बेस्ड है. तो बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी कि कैसे क्या लिंक होते हैं, कैसे स्मगल होता है, या कैसे पकड़ते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं. वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो एंजॉय कीजिए शो को. Thank you. With that, we have only time for one last question. Yeah, hello everyone. Shilpa here from Mayapuri magazine. Where? Here. Yeah, if you could. Yeah. Yeah. अमृता, मेरा सवाल आपसे है. तस्करी सीरीज को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा आपकी तरफ से तो वो क्या होगा? और दूसरा सवाल, जिस तरह से आप वुमेन कस्टम ऑफिसर बनी है, तो इस रोल में जाते वक्त क्या कुछ चैलेंजेस कुछ आए? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है ट्रेलर में आपका अंदाज, आई थिंक आपकी ऑडियंस ने शायद ही ऐसा अंदाज आपका देखा होगा स्क्रीन पर. जी, एक्चुअली ये अंदाज मैंने भी अपना पहली बार देखा है, बिकॉज मैंने इससे पहले कभी एक्शन किया नहीं था. तो एक्शन करते करते ऐसा हुआ है कि किसी का मुंह एक्चुअली तोड़ दिया मैंने, और अपना हाथ भी तुड़वाया है. तो ये सब मेरे लिए पहली बार था. नीरज सर के साथ काम करना पहली बार था. और ये जो पूरी कमाल की कास्ट बैठी है, आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक टू वर्क विथ हिम, एंड in close proximity with Nandish and Imran sir. I think to work with them, to work as a team was simply amazing. और मुझे एक चीज़ यहाँ पे कहनी है कि नीरज सर की जो टेकिंग है ना, उस एक शॉट में इतनी सारी चीज़ें होती रहती है ना कि आपको ऐसे लगता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. एंड वो जो थ्रिल आता है ना, मुझे ऐसे लगता है एज एक्टर्स हमको तो आता ही है, बट ऑडियंसेस को भी आता है. एंड टू कम बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि तस्करी को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए, मुझे लगता है तस्करी एक ही वर्ड है, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन आ गया है. आई थिंक ये जो एंड आई ऑल्सो फील इट्स अ वेरी मुंबईया शब्द ना, तस्करी करके. आई जस्ट फील इट्स गॉट दैट फ्लेवर जहाँ पे यू नो it's I don't know, I just feel that it's a very Mumbaiya शब्द. It's because कुछ है उस एक वर्ड में ना, आपको सारी जो चीज़ें हैं, जो घोटाले हैं, सब समझ में आ जाते हैं. whatever the smuggling is happening, not happening, आपको सब समझ में आ जाता है. So I think तस्करी is the correct word for this series, and बस I would want to say ditto. That's it. Thank you. There's also something that I'd like to add, that I just found the answer to what was the most challenging thing about Taskari. I think to make a family show with Imran, I think that is quite a challenge. And we managed to pull that, and I think you guys are going to love it. Thank you. And I also control myself for the show. Well, वक्त को मद्देनजर रखते हुए इंट्रोगेशन का वक्त अब खत्म हो चुका है. मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, प्लीज थोड़ा आगे आ जाए फॉर अ नाइस फोटो ऑप. इस लम्हे को कैप्चर करते हैं.